Hello everyone, welcome to class. Today I have come with an English topic and which is very important for you. So now I'm going to tell you about how to circle the correct letter. Today I'll discuss with this topic. So now let's move on the written portion. So let's start with me, circle the correct. Now students, we have learnt a letter from A to I till now. So today I am going to describe a very important and colorful exercise. And the exercise is also, see the picture and circle the correct letter. Means आपको ये पिक्चर्स को देखना है और पिक्चर्स के सामने जो मैंने लेटर्स लिखे हैं कर्सिव में, उनमें से किस पिक्चर से कौन सा लेटर सही है या कौन से लेटर से ये पिक्चर है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको सर्किल बनाना है. Isn't it? So now let's start with me. So just look at this. I have drawn some pictures. Now we'll start from first picture. So guys, you just tell me which picture is this? Yes, this is X. Say all together with me. One more time. This is X. Means kulhadi. And do you know what is the use of X? I'll tell you. हम इससे लकड़ी को काटते हैं. So X start from the letter A. Okay. X start from the letter A. So let's find out the letter from first row. And now let me one thing. Which letter we have circled among these three letters? Yes, letter A. But is this letter A? No. Is this letter A? No. Is this letter A? Yes. This is the letter A and A is here. So what we'll do here, you will circle this letter A. आप A letter को circle करोगे. Okay. So now just move on to second picture. And this picture is very easy for you. So now just let me one thing. What is this? Yes, this is cat. So let's find out the letter which is related from the cat. So these three letters are written here and find out the correct letter. So firstly you tell me, जो cat होती है वो किस लेटर से स्टार्ट होती है? Yes, letter C. C for cat, जिसको हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं. And where's the C? Yes, this is the C. So now have make a circle of letter C. Come to the third picture, and this is fish. Fish means machli. Okay, so fish will start from the letter F. So now just find out where is F. I think this is F. And yes, you are correct. This is the letter F. So now I am making one circle of letter F. Okay. Again, what is this? I don't think मुझे बताने की ज़रूरत है, but फिर भी this is ice cream and it's very tasty, it's very yummy. So now just let me one thing, how's we taste? It's sweet or sour? Means ये मीठा होता है या नमकीन होता है? Yes, you are right. This is sweet. And
Ice cream will start from the letter I. So just find out where is the letter I. And this is the I. So have make a circle of letter I. Okay. I hope आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे बहुत अच्छे से. सो आपको कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही कराना है. All these exercises will do in your English copy. And एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ कि वीडियो में जैसे आपको वर्क कराया जा रहा है आप एज इट इज़ कॉपी पे भी वही कराएंगे. नो मोर चेंजेस. अगर आपको इसको किसी और वे में बताना है तो आप उसको रफ कॉपी में करा सकते हैं. ओके. बट इन योर इंग्लिश कॉपी डन यू दिस वर्क विल सेम लाइक दिस. ओके. बिल्कुल ऐसे ही वर्क होना चाहिए आपकी कॉपी में. सो ये था हमारा सी द पिक्चर एंड सर्किल द करेक्ट लेटर. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड अगेन I request to all the parents, you all will cooperate of your children in doing homework very nicely. So practice this topic till the next video and I hope you are doing very well. So after this written portion, मैं आपके लिए worksheet भी लाई हूँ. So just have a look this. So now this is the worksheet and the first worksheet is just see the pictures and circle the correct letter. Means पहली पिक्चर एलिफेंट की है तो आपको E for elephant यानी E पे सर्किल करना है. Now just look at the second worksheet. ये भी सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें आपको अल्फ़ाबेट पढ़ के और करेक्ट पिक्चर को सर्किल करना है. लाइक मैंने A for आंट को सर्किल किया हुआ है. ऐसे ही आप पिक्चर्स देखते जाएंगे और सही अल्फ़ाबेट के हिसाब से सर्किल करते जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. कीप प्रैक्टिस in your home and do very well because practice is very important. So that is why I have given worksheet for you. Till then,